Hello everyone, myself Sneha Yogesh Bhore and welcome to my channel AgriGuru Sneha. Today we are going to study blast disease of rice. Disease. A plant disease is an abnormality in the structure and function of the host plant cells and tissue as a result of a continuous irritation caused by a pathogenic agent or an environmental factor. Disease rice blast. Rice blast is one of the most destructive diseases of rice, also known as rotten neck. In rotten neck disease, necks are often infected at the node by rice blast fungus, and infection leads to a condition called rotten neck or neck blast. Host pathogen is Magnophorthi oryzea, Anamorph pyricularia oryzea. Host plant is rice and the botanical name of rice is Oryza sativa. Introduction. Most common and diagnostic symptom diamond shaped lesion of rice blast occur on the leaves. Diamond shaped, also known as spindle shaped. Rice blast, also called as rich man's disease. This is the airborne disease that is spread through wind. The symptoms of rice blast include lesions that can be found on all parts of the plant, including leaves, leaf, collars, necks, panicle, seed, node. A recent report shows that even roots can become infected. The most common and diagnostic symptoms diamond-shaped lesion of rice blast occur on the leaves, whereas lesions on the sheath are relatively rare. Let us see leaf blast. The symptoms on leaves may vary according to the environmental conditions, the age of the plant, and the levels of the resistance of the host cultivar on susceptible cultivars. Lesion may initially appear array green and water soaked with a darker green border, and they expand rapidly to several centimeters in length on susceptible cultivars. Older lesions often become light in color with necrotic borders on resistant cultivars. Lesions often remain small in size, 1 to 2 mm, and brown to dark brown in color. Diamond-shaped lesions are leaves with ashes center and dark brown margin. In the image, let us see the diamond-shaped लेशन also known as spindle shape. बीच में मोटे साइड से टेम्परिंग लेशन राइस के लूज पे देखने में मिलते हैं. ब्लास्ट मीन्स बर्न अपीयरेंस, जली हुई अपीयरेंस. स्पिंडल शेप्ड लेशन स्पॉट्स लिप को पूरी तरह कवर करेंगे. इससे हमें लिप पर जली हुई अपीयरेंस दिखाई देगी. इसे ही हम लिप ब्लास्ट कहते हैं. नेक ब्लास्ट. नेक ब्लास्ट also called as neck rot और rotten neck. rotten neck में क्या होता है? जो डिसीज है नेक के पोर्शन में अटैक करेगा. नेक के पोर्शन में रोटनिंग हो जाती है और जो पोर्शन पैनिकल को सपोर्ट कर रहा है उस पोर्शन को भी रोटनिंग हो जाती है. Rotten neck symptoms appear at the base of the panicle, starting at the node. The infected tissue turns dark brown to black and shriveled, causing the stem to break. इससे क्या होगा? फंगस जब नेक पर अटैक करेगा तो पोर्शन ब्राउन से ब्लैक हो जाएगा. इसे हम पैनिकल ब्लास्ट भी कह सकते हैं. Panicles usually develop a black color and shrivel either completely or partially often. They break and the heads fall to the ground. Neck blast cause white heads or white panicles similar to stem borer infection.
The neck of the rice plant refers to that portion of the stem that rises above the leaves and supporters. The seed head or panicle infection of the necks can be very destructive, causing failure of the seeds to fill, a condition called blanking. This question asked in examination, that is, what is seed blanking? Or ensuring the entire panicle to fall over as if potted. इस इमेज में हमें दिख रहा है रटोनिंग ऑफ द नेक. Collar blast. The collar of a rice plant refers to the junction of the lip and the stem sheath. Junction means the state of being joined. Lip और stem sheath को जो join करता है उसे collar बोला जाता है. Symptom of infection of the collars consist of a general area of necrosis at the union of two tissues. Two tissues में necrosis हो जाते हैं. Necrosis means death of any cells and tissues. Collar infection can kill the entire lip and may extend a few millimeters into and ground the sheath. The fungus may produce spores on this lesion. Collar blast can kill rice plants at सीडलिंग स्टेज एंड कॉज इल लॉस. इसमें इल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है. कॉलर रीजन is the part where flag lip arises, that is the first node of the plant. Node blast. Node infection occurs in banded pattern. Banded means light or dark pattern. Lesions on the node are blackish to grayish brown. Infected nodes can cause the culm or the part of the plant that holds the panicle to break. Node blast can also cause white heads or white panicles similar to stem borer infection. नोड ब्लास्ट में क्या होता है, नोड पर अटैक करेगा, उसे नोडल ब्लास्ट बोलते हैं. As seen in the picture. फंगस. आप सबको पता है फंगस दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल एंड दूसरा असेक्सुअल. In sexual, fungus that occurs rice blast is called Magnaphorty oryzia. Asexual में क्या होता है, the asexual stage fungus that causes rice blast is called Pyracularia oryzia. मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, डिसीज प्लांट को हटा दे सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. ओके, डिसीज प्लांट को हटा दो और डिस्ट्रॉय कर दो. देन सेकंड, ग्रो रेजिस्टेंट टू मॉडरेटली रेजिस्टेंट टू वैराइटीज. CO47, IR20, ADT36, ADT39, ASD18, IR64. Second, avoid cultivation of highly susceptible varieties with IR50. ससेप्टिबल वैरायटी नहीं लगानी चाहिए IR50 जैसी. रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द बीड होस्ट इन द फील्ड बंड्स एंड द चैनल. फील्ड को क्लीन रखना है. जो भी होस्ट है जिसके ऊपर फंगस सर्वाइव करता है उसे हटा देना है. यूज ऑफ सिलिका. कैल्शियम सिलिकेट. सिलिका के एप्लीकेशन से राइस ब्लास्ट कम किया जाता है, इसलिए हमें कैल्शियम सिलिकेट का यूज़ करना चाहिए. ट्रीट द सीड विथ कैप्टन एंड थायरम कार्बेंडाजिम और ट्राइसाइक्लोजोल एट 2 ग्राम पर kg और पिसुडोमोनास फ्लोरोसेंस एंड
10 kg of seed. Spray the nursery with carbendazim 500 mg per liter. सीड की ट्रीटमेंट करनी चाहिए किससे, तो कैप्टन एंड थैरम कार्बेंडाजिम से और ट्राईसाइक्लोजोल से एट 2 ग्राम पर kg. Also spray the nursery with carbendazim 500 mg per liter. I hope all your concepts are clear. If you have any question, then ask me in the comments. Thanks for watching my video.